Namaste, good afternoon, and welcome to the post-lunch special session at the 19th CII Sustainability Summit titled India's Leadership in Driving a Sustainably Conscious World. It is indeed a pleasure in welcoming the chief guest today, Shri Bhupendra Yadav, Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Please join me in extending a warm welcome to the Honorable Minister. We would also like to welcome Mr. Sanjeev Puri, President, Confederation of Indian Industry, and Chairman and Managing Director, ITC Limited. And Mr. Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry. I would now like to invite Mr. Chandrajit Banerjee for his opening remarks. Our Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, the Government of India, Shri Bhupendra Yadav ji, Shri Sanjeev Puri ji, the President of CII, Excellencies, ladies and gentlemen. Mantri ji, today we have 14 plenary sessions on this subject, sir. And the special plenary session with you, as you can see, we have not just these 400 people in this room. There are live streaming sessions because we couldn't accommodate in this room in the other hall. But another good feature, sir, is we are having a startup exhibition in the adjoining hall on innovations on climate, on circularity, all of this, but captured by startups. Sir, वो भी हम कर रहे हैं, and B2B meetings, which we have been doing actually over the last 2 days today. Around 200 we have been able to schedule. So some of those are business side of it, which you always like to happen, we have been able to carry out. So we are indeed very, very honored to have you and your presence. And this is the 19th edition of this flagship summit on sustainability. And this year, as you were walking in, you were asking us the theme, and it is driving change for a sustainably conscious world. So, you see, theme is what we have adopted. So, what we have seen under your visionary leadership, we have been able to work with countries around the world, and we have been able to catalyze your government's very unique, if one can say, innovative and some of the path-breaking initiatives that you have taken, you have championed, the programs, the schemes on sustainability, that have been something that we have been able to socialize, and our country's strides towards the journey have mandated really very well by your ministry, as well as across. We have seen the country. Yesterday, sir, I was in Gandhinagar attending a conference on Reinvest, and we see the type of leadership our country has established in this entire ecosystem, and we really want to laud you, appreciate your leadership. Thank you for all your guidance and support over the years. Sir, as an institution, you have always asked us to focus on this subject very strongly. And every year we have deepened this particular institute, which is called the CII-ITC Center for Excellence on Sustainable Development, is an institute which has been very, very strongly sponsored, led by the ITC group, and they have really given us over decades phenomenal support as a private sector promoter for this institution. And we are covering many, many areas through our centers. We would like to just mention that our work on water through a innovative tool which is called WattScan is well integrated and IT driven, and also GIS and remote sensing based information, which enables comprehensive watershed evaluation for water planning and assessment. So that's one important new area of work which is going on for the last just for some time. And another aspect of our work, which from this institute, which we wanted to highlight, is our work with our farmers on helping them with sustainable agricultural practices, which includes
managing crop residue. So we have been working with almost 1.5 lakh farmers in 700 villages in 12 districts of Punjab and Haryana. And the agriculture practices adopted by the farmers have resulted in several millions of liters of water which is being saved, and we have avoided carbon and CHG emission on account of reduced burning of the residue. So we have on the sidelines of this summit, in that startup exhibition where I was talking about, where some of them are exhibiting how the innovations which will convert the residues into useful products. And to help our industry build resilience to the growing and this unpredictable nature of climate events which we were talking as we were walking in, we have also designed a physical climate risk assessment framework. And we are leveraging our various offices around the country, sir, as well as the Center of Excellence, to identify some key adaptive strategies as per the specific requirements and cascading the framework to industries across the country. So lastly, I just wanted to mention also about one of the other efforts that we have taken, which is on green building and voluntary green building rating. And that has received a phenomenal record of more than 14,000 plus green building projects coming up, with a registered footprint today of about 12 billion square feet of certified green building space. So this is second only to United States in the world, that India's achievement. And we have certified over 8,000 plus green products, or many types of products that go into the building, and helped over 2,000 companies to improve their energy efficiencies. And one of the important components of this effort has been working with our MSMEs on climate action. So much of these ideas, as you will appreciate, had come from the previous interactions that we have had with you, and you had told us to engage particularly on the small and the startup ecosystem and the MSMEs. So once again, we are indeed delighted and honored that you have graced this important occasion, and we would like to understand from you as to how do we keep on this track and do more under your guidance. And once again, a very, very warm welcome to you, Honorable Minister, for being a part of this very important summit, and welcome all of you once again. Thank you. Thank you, Mr. Banerjee. I would now like to invite Mr. Sanjeev Puri to please address the gathering. Shri Bhupinder Yadav ji, Minister for Environment, Forest, Climate Change, Government of India. My colleague from CII, Chandrajit, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It's a privilege for me also to welcome all of you to this very important summit on the theme Driving Change for a Sustainability Conscious World. It's indeed a privilege, Honorable Minister, to extend to you a very warm welcome. We're grateful, sir, for you for sparing this time to be with us today. And I also take this opportunity to congratulate you for leading unique initiatives aimed at the adoption of sustainable practices, encouraging circular economy, inspiring pro-environment behavior change through timely policy interventions. Mission Life, Lifestyle for Environment, a unique initiative announced by the Honorable Prime Minister at COP26, became a global movement in March this year when India's resolution on promoting sustainable lifestyles was adopted by the United Nations Environment Assembly. The inspiring vision of Viksit Bharat recognizes that environmental sustainability is central to the country's growth ambitions as well as the net zero goal. As India navigates the challenging development pathways to a Viksit Bharat, the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas will chart the contours of this complex journey. We've all been witness to the escalating extreme weather events
that today pose existential threat to society. The annual global temperature in 2023 crossed the threshold of 1.5 degrees above the pre-industrial level, and this is the 9th consecutive year of 1% plus temperature. July this year was the warmest July as per NOAA's data for 175-year record. And the consequences of this are there for all of us to see. 318 out of 365 days in the last year, we witnessed at least one extreme weather event. Agri-value chains, which are most vulnerable to climate change, have faced tremendous challenges. Studies, in fact, indicate that there could be major decline in crop yields due to climate change, as much as 9% over time. According to the World Bank, India could cross the Human Survivability Index from rising temperatures with more than 75% of the workforce exposed to heat stress by the end of the decade. Aggravating this is the severe water stress impacting 2/3 of the country's districts. We've all been witness earlier this year when several parts of the country faced water shortages, water challenges. And whilst there has been a lot of commitment on net zero at enterprise levels, at country levels, but the global stock-take report of COP28 very clearly says that we are not on track to achieve the goals set out in the Paris Agreement. India, in fact, is the only G20 country that is on track. It is evident that efforts need to be accelerated rapidly for us to deal with this very serious issue that faces the entire world. And India, though, has lower emissions as compared to the world average, but is also facing the brunt of it because climate change has no boundary. While on one hand, we are seeing actions being taken to decarbonize, actions on circularity, on energy transition, and so on and so forth. Certainly, a lot more needs to be done, and the pace of change needs to accelerate. A lot of resources are called for to manage the transition, which is not merely about the technology, but it's also about the social costs associated with the system's transition. India alone needs, it is estimated, $12 trillion by 2050. And this will have to be funded by a combination of public, private, and multilateral funding to catalyze private investments. It is important to create economically viable technologies. It's important to create the right incentives and disincentives, and at the same time reduce the frictions in the system, because with economic viability, private investment is bound to flow and get accelerated. And I like to compliment the government for taking several measures in this direction. And besides the proven and economically viable solutions that of course need to be accelerated, I think I also like to compliment the government for the initiatives to develop the technologies and the pathways for tomorrow to deal with some difficult to abate or hard to abate sectors, including areas like green hydrogen, carbon storage, capture, amongst others. While this effort must no doubt get accelerated, I think at the same time, the reality is that the reduction in temperatures is going to happen after a long period of time. Till such time, we have to go through a path where temperatures will move upwards. And that means more extreme weather events. So how do we, as a society, adapt and learn to live in this world which is going to get hotter, which is going to have more extreme weather events? How do we adapt to that? And I think that is a very, very pressing need, very, very pressing need. And this is a difficult subject because it is about managing the physical risks associated with
multiple dimensions of the society. However, we still need to design effective adaptation strategies, and which need to be implemented at multiple levels. We need to develop the science behind it, supported by evidence-based policies, and driven by data-driven risk assessments. Now, this is a very, very important and critical and pressing area that needs to be addressed immediately. And in that context, I like to also, again, acknowledge the government of India's efforts in developing the National Adaptation Plan and setting up the National Adaptation Fund. And we have, at the CII-ITC Center of Excellence on Sustainable Development, we have also been working on this subject for a fair bit of time, and over several months. We've also been working with our partners in developing an approach for this difficult subject. And we do have a certain set of suggestions, the report, the summary of which will be released today. And I'd like to share some key facets of it. And I hope, Honorable Minister, some of these suggestions you would find useful as you formulate the policy. Now, what we have, what we really say, the starting point is when we have to address a risk, it goes without saying that you have to assess the risks. Assessing the risks not merely from past data, but also being able to look forward and see what could happen in future. So what we do require is, one hand, availability of history of all this data. Second, we do require sophisticated AI-based tools to be able to forecast. And therefore, what we are proposing, what we are suggesting is, if a public utility which captures data and also sophisticated AI-based technologies which are being developed in some areas, so that this is available to the public at large to be able to assess and understand the risks associated. And that will be the starting point to be able to develop the mitigation plans. Second, what we are also recommending is, because a lot of decision making, particularly in corporates, is driven by economic considerations. So we must also put down the economic costs of not acting. And therefore, this report also talks about a framework to kind of put a number to the economic costs. Research has shown that $1 spent on adaptation leads to $4 of saving, but everybody does need to put it down in its own context. The third facet this report covers provides a framework to deal with these risks that are identified. Frameworks to address the risks that arise immediately, and also risks that would arise in future. So the forecast will help you understand risks in future, and there can be a modular method of approaching it. And these risks could be in the physical infrastructure, could be to do with agri-value chains, could be due to availability of water itself for carrying out industrial activity. And this report also captures certain proven solutions that have been, or good examples that have been employed by society at large, by companies at large, and that have been proven to be successful. The fourth important pillar here is the importance of partnerships. Because there are multiple stakeholders that have access or use the same resource. So all stakeholders, along with the government, in the spirit of true partnership, need to come together to be able to find a solution. And lastly, a very important area is the need to address the challenges, very, very importantly, to focus on MSMEs. And this is an area that Chandrajit also spoke about. At the center, we have been working closely with MSMEs in building capacity. These we believe are good starting points to address this issue about climate adaptation. And as we go along, I'm sure there are unknown pathways also that will have to be evolved and discovered. And in this context, I want to emphasize that, corporates, as very important economic organs of society, must play a critical role. We are, after all, trustees of societal resources, and we have a responsibility of nourishing these resources. And it is also in our self-enlightened interest to do so. And I believe when you
bring these objectives right into corporate strategy. Very interesting and innovative pathways are discovered to provide solutions that integrate simultaneously the creation not only of shareholder value, which is the economic gains, but also simultaneously creates environmental and social capital, what is commonly known as triple bottom line. And in ITC, we have been practicing this, and we call it responsible competitiveness. And I seek your indulgence to just give a little example from ITC, because that's the journey that I have gone through, just as sharing an experience. So we have nearly over nearly 3 decades been practicing the triple bottom line approach, and today we are probably the only enterprise in the world to be carbon positive, water positive, solid waste recycling positive for nearly 2 decades. The first 12 hotels in the world to be LEED certified net zero carbon hotels are all ITC hotels. Now, all this has happened over a period of time, and it is not that the economic interests have been compromised. We fortunately also have happy shareholders. So all this can be done simultaneously. There is no inherent contradiction. And it's also, as an organization, makes us more efficient. It also, as an organization, creates some preferences for people who are looking to stay in hotels, for example, that have low carbon emissions or zero carbon emissions. So there is a win-win situation. In recent years, there's been a lot of focus on adaptation, because we have seen the impact on our physical infrastructure. We have seen the challenges of water. We have seen the challenges in the agri-value chains. And I just want to give 2 examples quickly, or maybe the starting point on how we assessed our risks. We used an advanced AI climate risk modeling tool to assess the risks in our catchment of operations and to the communities in which we operate. We looked at 140 sites. We looked at select agri-value chains, identified the hotspots, and these were evaluated over decadal timeframes extending up to 2100 under various shared socioeconomic pathways. Dynamically, this will have to be updated. And as an outcome of that, there are certain initiatives we took. One was climate smart agriculture. It now is nearly in 3 million acres. And I'm happy to say that the ones that we started a few years back, 70% are in high resilience and high yield category. And in those areas, GHG emissions have reduced between 13 to 66%, and farmer incomes have improved by up to 90%. So what is good for the planet is also good for the farmers. The second area I want to speak about is really water, which is a very, very serious challenge we face. So we worked on the agriculture side and on the industrial side as well. On agriculture, working both on the demand and supply side. Demand side, through better practices, up to 50% reduction. On supply side, through integrated watershed management, we have 32,000 structures contributing to irrigation in 1.6 million acres. This again builds resilience of agriculture. Similarly, in industrial catchments, because we do realize that if there is no water, industrial activity cannot continue. So all our sites in high water stress areas, we are getting AWS certified. And we thought that it's not just enough to stay within the fence, we have to go out of the fence. Because if there's no water in that catchment, in isolation, we will never succeed. So first we worked on the river basin near Ranjangaon called the Gaud River. And after a few years of working along with all the stakeholders, from being a negative water balance, today it's in the positive water balance. And similarly, now we are working in several other river basins with stakeholders, which are around our catchment areas. And the idea is again to make it a positive water balance. So I thought I would share some of these examples just to illustrate that there are certain pathways and solutions available today. And we all need to work together, share practices, share experiences, and collaborate to build some of those facets that are so very important
to adaptation. Before I conclude, I'd like to take this opportunity to acknowledge the 19 years of partnership between CII and ITC since the center was established. And since that time, the center has come a long way and has evolved and has got many, many areas of deep expertise. And I like to compliment Seema and her team for the tremendous work they are doing, and CB for the continued mentorship at the center. And I'm sure over the next 2 days, you will all find very interesting and very insightful sessions and good learnings to take away and apply in your sustainability journey. And I would once again, Honorable Minister, like to thank you for being here with us today. And you've always taken visionary steps in accelerating India's sustainability journey. And we in CII remain committed, industry remains committed to this path. And we look forward to hearing your thoughts and guidance as we chart out the next steps at the center. Thank you, sir. Thank you, Mr. Puri. It is indeed our privilege to request the Honorable Minister to unveil this report, Building Climate Resilience for Indian Industry. I request our dignitaries on the dais to kindly step forward. Thank you. I would now like to invite our chief guest for the summit, the Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, for his keynote address. श्री चंद्रजीत बनर्जी जी, श्री संजीव पुरी जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धगण और वर्चुअली जुड़े हुए भी CII के सभी अटेंडीज। अभी जब संजीव पुरी जी विषय रख रहे थे तो पेरिस एग्रीमेंट का उल्लेख कर रहे थे और वो कह रहे थे कि G20 देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसके एनडीसीज ट्रैक पर है। मैं इतना ही एडिशन करना चाहूँगा कि केवल ट्रैक पे नहीं है, हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो अपने 8 एनडीसीज डिक्लेयर करे थे, 3 क्वांटिटेटिव थे, 5 क्वालिटेटिव थे, 3 में से 2 टारगेट हमने समय से 9 साल पहले पूरे किए हैं और उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनका जन्मदिन भी है। पिछले 10 सालों में उनकी विजनरी लीडरशिप में हमने हमारे देश में न केवल एनडीसीज के टारगेट को अचीव किया है, बल्कि अगर आप पिछले तीनों कॉप देखेंगे, जब ग्लासगो का कॉप हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का एक पूरा विज़न सबके सामने रखा था और ग्लासगो में हमने दुनिया के सामने विषय रखा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी एनर्जी नीड्स की हकीकत को भी रोका नहीं जा सकता। उसके बाद जब शर्म एल शेख का कॉप हुआ तो भारत ने अपने रिवाइज एनडीसीज पेश किए और पिछली बार जब यूएई में कॉप हुआ तो ग्लोबल स्टॉकटेक लिया गया, लेकिन भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है कि पेरिस के बाद जो ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन की बाइनियल रिपोर्ट दी जाती थी, हमने 2019 की इन्वेंट्री के बेस पे दी और दुनिया में ये सिद्ध किया कि हमारी ग्रीन ग्रोथ और इकोनॉमी की ग्रोथ
दोनों बराबर चलती है। भारत ने एग्जाम्पल सेट करके दुनिया के सामने रखा है। और इसलिए आज का जो टॉपिक आपने रखा है, ड्राइविंग चेंज फॉर ए सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस वर्ल्ड, विषय जब सस्टेनेबिलिटी का आता है तो सस्टेनेबिलिटी ये हमारा सोशल गोल है। मैं सोशल गोल इसलिए कहना चाहूँगा कि किसी पे कंपल्शन नहीं है कि उसको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीनी है। ये दुनिया की एक हकीकत है कि जिस डेवलपमेंट के पाथ पर आज दुनिया जा रही है, अब उससे हम पीछे नहीं हट सकते। अब उस पाथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो डिग्निफाइड लाइफ है उसमें आज इस बात की आवश्यकता है कि दुनिया के हर व्यक्ति को एनर्जी के रिसोर्सेज पहुंचाने पड़ेंगे और हर सरकार को पहुंचाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी तरक्की का जो मेन आधार है वो एनर्जी है। आजकल एनर्जी ड्रिवन लाइफ है और इसलिए सस्टेनेबिलिटी की बात जब दुनिया में सभी प्लेटफॉर्म्स पे चलती है तो लोग ऐसा मानते हैं कि जितना कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं, क्या उतना कंजम्पशन करने के बाद इस पृथ्वी का अस्तित्व रह पाएगा, ये एग्जिस्ट कर पाएगी। वैसे नॉर्मली जब सस्टेनेबिलिटी के आंकड़े दिए जाते हैं तो हमें दुनिया का लार्जेस्ट या थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे कार्बन एमिशन में रखा जाता है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन है, हमारा कार्बन एमिशन 4 और 5% है, लेकिन दुनिया के 17 डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए और उनकी इंडिया के बराबर जो पॉपुलेशन बनती है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। तो बहस इस बात की होनी चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इससे नहीं रुक सकता है। दुनिया को नापना ये चाहिए कि कार्बन एमिशन नहीं, पर कैपिटा इसका खर्चा कितना हो रहा है, इसके आधार पर मानक तय होने चाहिए। और इसके लिए ही हम दुनिया में सारा विषय रखते हैं। दूसरा विषय जब चलता है वो लॉन्गेविटी का चलता है कि अल्टीमेटली जितने रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कितने समय तक चल सकते हैं। और केवल क्लाइमेट चेंज में एक सब्जेक्ट तो ये आता ही है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। अभी मेरे से पहले के वक्ताओं ने भी उसकी तरफ अपना विषय रखा था, लेकिन धरती के तापमान बढ़ने के साथ धरती के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी कितनी बच रही है, और उसके साथ जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड की कितनी चुनौतियाँ जो फ्यूचर में फूड का संकट को खड़ा करेंगी। और इसलिए सस्टेनेबिलिटी में पहला विषय जो मैंने कहा कि ये जो अर्थ है इस पे लोगों का एग्जिस्टेंस कितना रहेगा अगर यही पैटर्न कंजम्पशन का रहा। जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका कंजम्पशन का अगर पैटर्न आज अफ्रीका की इथोपिया जैसी कंट्री के भी लोग अपना लेंगे तो आज ही हमारा एक दुनिया से काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम 7 दुनिया चाहिए, 7 ईयर। अगर कंजम्पशन पैटर्न ये रहेगा, हमारा 17% पॉपुलेशन होने के बाद भी कंजम्पशन पैटर्न जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के बराबर लाइफस्टाइल के कारण। तीसरा जो विषय चलता है वो ये है कि अगर दुनिया का एग्जिस्टेंस खतरे में है, रिसोर्सेज की लॉन्गेविटी पे अगर हम सोच रहे हैं, तो आज के समय की दुनिया में 3 बातों का बैलेंसिंग करना जरूरी है। वो 3 बातें हैं, पहला एनवायरनमेंट, दूसरा इकोनॉमी और तीसरा इक्वलिटी। क्योंकि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात चलती है और पेरिस के बाद लगातार चाहे शर्म एल शेख में लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाने की बात हो, चाहे पिछले यूएई की कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल स्टॉक टेक लिया गया हो,
और अभी भी जो इस बार की जो कॉप होने वाली है अजरबैजान बोको में, वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये कहा था, हिस्टोरिकली उन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस का कार्बन एमिशन का क्षेत्र उन्होंने ले रखा है, उन्होंने डेवलप जो आज वो हुए हैं, तो उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसलिए उन्होंने वादा किया था कि $100 बिलियन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दोनों ही विषय में पूरे नहीं उतरे। और अब जब न्यू क्वांटिफाइबल गोल तय किए जाएंगे दुनिया के, जितना एमिशन अभी हो रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी एनर्जी की नीड के हिसाब से जितना उनको आगे अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को बढ़ाने में करना होगा, तो $100 बिलियन तो बहुत छोटा हो गया है। अनुमान है मोर देन $5 ट्रिलियन पैसा आज दुनिया के सामने चाहिए होगा। इसलिए 3 बातें मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा। पहला विषय है एनवायरनमेंट, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इक्विटी। क्योंकि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ ये हर आदमी को चाहिए, और इसलिए जो की आइडिया है हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेस को हमें किस प्रकार से और कितने अच्छे तरीके से दुनिया में यूज़ करना होगा, ये सस्टेनेबिलिटी का कोर आइडिया है जिस पर हमको बात करनी चाहिए। और इसलिए पहला विषय तो कंजम्पशन पैटर्न का चलता है। अभी आपने हमारे चंदन जी ने और संजीव जी ने पानी के संकट को लेकर के बात बताया है, और हम जब मिशन लाइफ में इस समय देश के जितने भी यूथ हैं जो इस समय देश की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हैं, उनसे हम लोग आइडियाज़ फॉर लाइफ ले रहे हैं। आइडियाज़ फॉर लाइफ का अर्थ है कि हम अपने स्टार्टअप खड़े करें, अपने नए इनोवेटिव रिसर्च करें। हमें आज के समय में अगर देश में अपनी इकोनॉमी को भी आगे अच्छा बनाना है, तो 7 बड़े कोर आइडियाज़ पे नए से नए प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप, इनोवेशन, इसको लाना होगा। पहला है सेव फूड। कितना खाना 1.5 ट्रिलियन कितना फूड वेस्ट होता है, केवल फूड वेस्ट। दूसरा सेव वाटर। तीसरा सेव एनर्जी। इस एसी हॉल में बहुत लोगों ने हाथ ऐसे कर रखे, 23 डिग्री पे भी चल सकता है, लेकिन एनर्जी है, वी आर यूजिंग दैट। सो सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी और वेस्ट को एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अब वेस्ट छोटा हो गया है, सबसे ज़्यादा जो 5वां खतरा है वो ई वेस्ट है। छठा खतरा है हेल्दी लाइफ स्टाइल, और 7वां है कंप्लीट बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसके अल्टरनेटिव पे हम लोगों को जाना होगा। और इसलिए एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो तीनों विषयों का एक रिदम बनाकर, तीनों में बैलेंसिंग एक्ट करके ही आप देश में इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री एक तरह की नोडल मिनिस्ट्री है। हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा जो रेगुलेशन बनते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा रेगुलेशन किए जाते हैं, जिन्हें अन्य मिनिस्ट्रियां बहुत अच्छे तरीके से, एक कोऑर्डियल तरीके से उसको लागू करने का काम करती है। जैसे ई वेस्ट के विषय पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। टॉक्सिक एंड हजार्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं, रेगुलेशन हमारे द्वारा बनते हैं। स्क्रैप मेटल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा उस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। जिप्सम DPIIT के द्वारा। फिर यूज्ड ऑयल,
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा, सोलर पैनल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन के द्वारा किया जाता है। और पिछले समय हमने इस विषय की हकीकत को जानते हुए कि सर्कुलर इकोनॉमी एक आने वाले समय की बड़ी आवश्यकता है, हम लोगों ने सर्कुलर इकोनॉमी के एक्शन प्लान के लिए टायर, रबड़, उसके लिए भी हम लोगों ने रेगुलेशन बनाने का काम किया, ताकि जो बड़ा वेस्ट है इस पे हमारे स्टार्टअप नए तरीके से काम कर पाए, हम रीयूज़ और रीसाइकिल को लेकर के आगे बढ़ पाए। और सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी की इसी महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन और प्रोग्राम, इन सभी में काफ़ी आगे कार्य किया है। और इसलिए पिछले दिनों हमने पब्लिक कंसल्टेशन में भी डाले हैं 2016 के जो हमारे रूल्स थे, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो, चाहे हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो, जो अर्बन क्षेत्र में नए विकास को लेकर जो सबसे बड़ा विषय है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, उसके साथ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी ये जितना ज़्यादा बढ़ रहा है 2022 में हमने इसको पब्लिक डिस्कशन में भी डाला है। ई वेस्ट के साथ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, अभी जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम चलेगा, सरकार ने उसमें भी पॉलिसी स्टेप्स उठाते हुए उसके रूल्स को आगे बढ़ाया है। हजार्डियस एंड अदर वेस्ट रूल्स 2016 के हैं, उनमें हमने और अमेंडमेंट किया ही है। फिर जो सबसे बड़ा विषय हम लोग इस समय सर्कुलर इकोनॉमी में EPR जो है उसको लेकर के, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेस्ट टायर, उसी के साथ साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूज्ड ऑयल। फिर जो इस समय जितना एक और बड़ा विषय हमारे सर्कुलर इकोनॉमी में आता है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी एक बड़ा विषय है। फिर ऐश यूटिलाइजेशन के नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा निकाले गए, और मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन फंक्शंस व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के लिए भी किए गए। और गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट, शहरों की स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन के साथ गोवर्धन इनिशिएटिव को सरकार ने आगे बढ़ाए हैं। और इसी के लिए प्लानिंग को करने के लिए हमने स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जन शिक्षण संस्थान, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम और ग्रीन स्किल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम को सरकार ने बनाने का काम किया है। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी हम अगर आज इस विषय को देश में आगे बढ़ाना चाहें भी, अगर नए एंटरप्रेन्योर इस क्षेत्र में आएंगे भी, काम करेंगे भी, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, मेरे पास लिस्ट है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम किए हैं और कुछ की इनिशिएटिव भारत के द्वारा लिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, बायो इकोनॉमी और बायोफ्यूल को लेकर के, और इनिशिएटिव नीति आयोग के द्वारा भी समय समय पर इसके प्रमोशन के लिए किए गए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण आज के समय में विषय है कि हमको दो चीज़ों के लिए, क्लीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए हमें नए मार्केट भी डेवलप करने पड़ेंगे। और पिछला कॉप जब हुआ तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्रीन क्रेडिट फंड जो है उसको हम लोगों ने इनिशिएटिव दिया है। वैसे इस साल के 5 जून का जो हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे था, तब प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया, लेकिन इसमें कॉरपोरेट सेक्टर आए, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर आकर के एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते भी काम करें। अभी हमने इस योजना का नोटिफिकेशन निकालने के बाद इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार के इस 100 दिनों में चलाया है, कि स्पेसिफिक एरिया और टारगेट दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है उसके बेस पे हम इसको आगे लेकर के चलने का काम करेंगे, लेकिन उसमें लोगों ने बहुत रुचि दिखाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके अलावा जो जन भागीदारी का अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा सैम्पलिंग लोगों ने लगाकर हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराए। हम हमेशा ये कहते हैं कि इस ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ाने के साथ ही सरकार ने कार्बन मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमारे
एनर्जी मिनिस्ट्री ने कार्बन मार्केट के विषय को आगे बढ़ाया। फ्यूचर में सरकार इसको और आगे बढ़ाने का काम करेगी। और इसलिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता, आपने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निश्चित रूप से मेरे को दिया है, लेकिन जो आपने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि फ्यूचर में भी इतना बड़ा ये जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो चिंता पूरे दुनिया में बन रही है, पूरी दुनिया उसमें चलना चाहती है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है सरकार ने अपनी तरफ से ईज ऑफ डूइंग के नाते पॉलिसी सेक्टर में काफ़ी काम किया है। मेरे द्वारा जो लेजिस्लेशन और रूल्स आपको बताने का प्रोविज़न था, आप में से बहुत लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पे हम सरकार के इनिशिएटिव और विज़न को अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी के हर सेक्टर पे महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से CII के द्वारा भी जो अभी मुझे ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दिया गया है, रिसर्च को और बढ़ाने का विषय बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस क्षेत्र में रिसर्च बढ़ेगी, जब रिसर्च बढ़ेगी तो अपने आप में ये जो मैंने पहला विषय कहा था, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ सोशल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी तब आ सकती है जब रिसर्च के साथ इसका मार्केट भी बढ़े। पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो हम ईज़ ऑफ डूइंग की बिजनेस की बात करते हैं, तो रिसर्च के साथ मार्केट भी बढ़े। और रिसर्च और मार्केट बढ़ना नहीं है, रिसर्च और मार्केट के साथ जो तीसरा विषय है, इसके लिए स्किल बढ़े, क्योंकि वेस्ट को वापस से रीयूज़ करने के लिए भी स्किल को बढ़ाना होगा। और तीनों ही पॉलिसी के विषय पे सरकार बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है और आपके सहयोग के लिए काम कर रही है। और इसलिए रिसाइकल इकोनॉमी के साथ साथ सरकार का इस बात पर भी ध्यान है कि आज अगर आपने देखा होगा कि सरकार ने क्या 100 दिन पूरे हुए हैं, आज हमारे देश के गृह मंत्री जी ने भी 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड दिया है कि अगर 100 दिन में सरकार के विषयों को देखेंगे तो सरकार ने सबसे ज़्यादा काम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिसाइकल इकोनॉमी को बढ़ाने का और इसके लिए कोऑपरेशन करने का भी सरकार के द्वारा कई क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाए गए हैं। जहाँ तक मिशन लाइफ का विषय है, अभी एडेप्टेशन की बात हुई है, सरकार के द्वारा दुनिया के क्लाइमेट चेंज के लिए मिटिगेशन मेजर्स तो किए जाते ही हैं, लेकिन मिटिगेशन मेजर्स के साथ साथ एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस सोसाइटी अगर करती है, लेकिन उतना होने के बाद भी हमको दुनिया को अगर सस्टेन करना है सोशली, एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली, तो हमें कंजम्पशन पैटर्न में भी दुनिया में चेंज लाना होगा। कंजम्पशन करने में मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होना चाहिए रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन। और इसलिए माइंडफुल कंजम्पशन की ओर हम सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें तो भारत दुनिया में एक एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल ग्रोथ दोनों को साथ लेकर के चल सकता है। और CII जैसा इंस्टीट्यूशन इसमें रिसर्च, इनोवेशन, प्रैक्टिस और कॉपरेशन के माध्यम से बहुत अच्छा योगदान दे सकता है, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Honorable Minister, thank you very much for this very insightful address. I think you explained some of the principles that all of us need to follow in very simple terms with 7 steps. Thank you very much for that, and thank you very much for your leadership. And we in CII remain committed to be a very strong partner in this whole visionary journey that you and Honorable Prime Minister have set in place for sustainable growth. Thank you, Honorable Minister. Once. I request all the dignitaries to kindly step forward for a group photograph. Thank you. Ladies and gentlemen, with this, we conclude the special session. We thank our dignitaries on the dais for their time, presence, and thoughtful comments.